Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video we are going to start with a new subject, that is medical and surgical nursing. Okay, so this is going to be very much important for nursing students, especially BSc second year students and GNM nursing students. Okay, so before starting this video I have a small request. Please watch this video till the end so that you can get all the points clearly understood. Okay, so in this medical and surgical nursing we are going to discuss about the disorders which occurs from the cardiovascular system. That's what I have given the heading, that is management of patients with the disorders of cardiovascular and we can say hematological. Okay, so first of all let's split this term, that is cardiovascular. Cardio means heart, vascular means blood vessel, and hematology means we are going to study about the blood, yeah, the diseases which occurs from the blood, yeah, blood cells. Okay, so before I discuss about the diseases which occurs or which arises from this cardiovascular system, let's have a look about the review of anatomy and physiology of heart, yeah, we can say cardiovascular system. So human heart is a hollow muscular organ whose main function is to pump the blood, or we can say supply the blood to the entire body in order to fulfill the metabolic demands of your body. Okay, so human heart, the blood is mainly supplied all over the body by performing cardiac cycle. Cardiac cycle is mainly comprising of two different systems. First one is the pulmonary circulation and second one is the systemic circulation. What is pulmonary circulation? When the heart is going to receive blood from the different part of the body and it will be sending this blood to the lungs for the oxygenation, understanding, and then that process is known as pulmonary circulation. The blood is mainly going to be taken by pulmonary arteries and it has to be supplied to the lungs for the oxygenation, that is known as pulmonary circulation. And the next one is the systemic circulation, when the blood is mainly pumped by the heart and it is going to be supplied all over the body in order to maintain the homeostasis, or we can say metabolic needs of the body. So that is known as systemic circulation. Okay, so what is the main function of the heart? I already told you that it pumps the blood, it supplies the blood to the entire body organs or body systems. So in the blood, when the blood is being supplied, it mainly contains the oxygen and nutrients which are very much important for the cell growth and cell division. Okay, when the cells work properly, the tissues will be working properly, and when the tissues are working properly, functioning properly, the whole organ is going to function properly. When the organ system is going to function properly, and when the whole organ systems, that is the 11 different systems of the body, they are working properly, because these tissues, they need the oxygen and nutrients, okay, for the survival, understanding. So this is mainly going to be done by the cardiovascular system. Okay, so if we are going to talk about the size of the heart, we can say that size of the heart is about the owner's fist. And if we are going to talk about the length of the heart, that is 12 centimeter. If we are going to talk about the width of the heart, that is about 8 centimeter. And if we are going to talk about the thickness, जो thickness का मोटा, वो कितना मोटा होता है heart, it is mainly 6 centimeter. Okay, and if we are going to talk about the weight of the heart का weight mainly कितना होता है, it will be ranging from 280 to 340 grams. जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है वो होता है 280 to 340 ग्राम्स, और जो फीमेल्स के अंदर जो हार्ट होता है वो होता है 240 to 380 ग्राम्स. ओके, तो मैंने आपको पहले ही बोला जो हार्ट का साइज होता है, अगर आपको जानना हो तो आप बता सकते हो कि हार्ट का साइज जो है ना वो दैट विल बी अबाउट ऊनरस फिस्ट. ठीक है ना. तो नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट. That is, the heart is mainly enclosed by the cavity of the sac that is known as pericardium. This one is pericardium. ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो pericardium. Okay, and next thing is that layers of heart. यानी heart के कितने layers होते हैं? ठीक है, there are mainly 3 different layers of the heart. The outermost layer is known as epicardium. Epi means upon, cardium means heart. Okay, then next one is the myocardium. That is that's the middle layer. That is myocardium. Okay, and the third one is, we can say, the inner most layer of the heart, that is known as endocardium. Okay, so the heart is mainly enclosed in the cavity of the sac that is known as pericardium or pericardial sac. Next thing, that is, let's talk about the chambers of heart. Human heart is actually 4 chambered. Okay, having the 2 ventricles
and also we can say two atriums, two auricles. Okay, so two auricles are right atrium and left atrium, ventricles are right ventricle and left ventricle. Okay, so next thing is valves of the heart. Heart के कितने valves होते हैं? Mainly there are two different types of the valves. अगर हम classification करेंगे, first one is the semilunar valves. Semilunar valves मतलब this one and two, these two. Okay, so similar valves, first one is the pulmonary valve. पल्मोनरी वेल्व में क्या होता है? मेनली जो ब्लड होता है जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो फिर राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश करता है, ठीक है ना, अपर साइड में, फिर किस में जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए. कहां? पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द दिस वन एओर्टिक वेल्व. एओर्टिक वेल्व थ्रू क्या होता है? मेनली जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को अच्छे से पंप करता है, ठीक है, फिर उसको ब्लड को भेजना पड़ता है पूरी बॉडी में, तो फिर क्या होता है? ब्लड एंटर होता है किसमें? आर्च, इस आर्च ऑफ एओर्टा में थ्रू द पल्मोनरी आर्ट. अंडरस्टैंडिंग? तो फिर पूरी बॉडी के अंदर हार्ट ये ब्लड सर्कुलेट होता है. ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट जहां पे भी ब्लड की जरूरत होती है तो वहां पे जाता है. सो नेक्स्ट थिंग इज एवी वेल्व्स. ओके, मेनली ट्राइकास्पिड एंड मिट्रल वेल्व. इसमें मेनली ट्राइकास्पिड वेल्व होता है और मिट्रल वेल्व होता है. ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं मेनली बाइकास्पिड या मिट्रल वेल्व. ठीक है, यही मेनली कंट्रोल करता है ब्लड, यानी ब्लड का जो रिलीज होता है, जो ब्लड मेनली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर पास होता है. ठीक है ना, तो वहां पे बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा फोर्स होता है, जिसको मेनली वहां पे क्या होता है? ऑटोमेटिकली ये जिस वेल्व ओपन होता है तो फिर ब्लड को पास में होता है, फिर ऑटोमेटिक क्लोज होता है. क्यों क्लोज? इसलिए होता है ताकि इट विल बी प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ब्लड जो है ना उसको वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं होना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड वापस जाएगा तो वहां पे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, और जब ब्लड पहुंचता ही नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, नाउ so this was all about the anatomical structure, yeah, anatomy about the heart. Now next one is, let's talk about the physiology. Okay, so if we are going to talk about the physiology, that is functions. Okay, so functions of the heart. आपका जो हार्ट होता है ना, मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्ट होता है एक्चुअली एज ए हाउस. जैसे हाउस होता है, जैसे मेनली इसमें रूम्स होते हैं, इसमें डोर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें वॉल्स होते हैं, इसमें लेयर्स होता है. ठीक है ना, तो ऐसे बिल्ट होता है, ऐसे ही बना हुआ होता है मेनली. ओके, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, हार्ट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि इट हैज टू सप्लाई द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी. ओके, बाय पंपिंग, बाय प्रोड्यूसिंग द पंपिंग एक्शन. जब हार्ट के अंदर पंपिंग एक्शन होता है, जो मेनली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मेनली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, जब वो कंट्रैक्शन उसका होता है, तो कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब वहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो वहां से क्या होता है? जो ब्लड होता है वो दैट विल बी इजेक्टेड आउटसाइड द हार्ट फॉर द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है ना, तो हार्ट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो मेनली होता है कि इसको क्या करना पड़ता है? एडुकेट, इट हैज टू सप्लाई द एडुकेट blood to all over the body, which will be containing nutrients and the oxygen, which will be helpful, which will be very much important for the survival of the cells and tissues as well as the whole organ, so that the organs can function adequately. Okay, and also your heart is containing mainly the cardiac cycle, जो मैंने cardiac cycle already बोला है. ठीक है, यानी pulmonary जिसमें pulmonary circulation होता है और systemic circulation होता है. और दूसरी चीज क्या होता है? इसके अंदर conduction system होता है. यानी conduction system, देखो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो उसके लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए. ठीक है, उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हार्ट को, ताकि वो अच्छे से कंट्रैक्ट करे, ताकि अच्छे से वो ब्लड को पंप कर सके. तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम, जो मेनली जनरेट करता है इम्पल्स, जिसमें मेनली एवी नोड होता है. ठीक है ना, एसए नोड होता है, एबी नोड होता है. ठीक है ना, जिस पर लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच होता है. ठीक है ना, पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं, जो मेनली क्या करता है? पूरे हार्ट को ना इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है, ताकि जो आपका मसल्स होते हैं ना वो जनरेट करते हैं इम्पल्स, जो मसल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके थ्रू जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. So with this I am going to conclude this class. Okay, so in the next video we'll be going to discuss about the various cardiovascular disorders. Okay, so until then, Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.